Nitin, you can start now. लेकिन सर म्यूट है लेकिन सर अनम्यूट कीजिएगा लेकिन सर नितिन आप म्यूट पे हैं प्लीज. Sorry. Okay. हाँ जी. Hello everyone. So I welcome you all on this very interesting topic today in this webinar on outsourcing. We have with us our secretary, Ms. Ruchi Gupta of Jaipur branch, and our speaker, Mr. Dhaval Paun. So first of all, I'd like to invite Ruchi ji to have welcome address. Thank you, Nitin. Hello, everyone. Thank you for joining in. I think today's topic is something of everybody's interest. जैसे कि हम सब बोलते ही हैं कि प्रैक्टिस सेटअप करना इज अ डिफिकल्ट चैलेंज और इस वक्त बहुत डिफिकल्ट है कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑटोमेटेड एंड हमें न्यू एवेन्यूज ऑफ प्रैक्टिस ढूंढने पड़ेंगे, स्पेशलाइज्ड वे में हमें जाना पड़ेगा. इन दिस सिनेरियो आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द एरिया जो डेफिनेटली हमको हेल्प करने वाला है टू मेक अस डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. धवल जी जो हमारे स्पीकर हैं आज के, ही इज अ गुड स्पीकर एंड वो एक्सपर्ट है इस एरिया में, इसीलिए हमने उनको इनवाइट किया फ्रॉम राजकोट टू एड्रेस पीपल अराउंड सो दैट हम लोग भी समझ सके ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी सेट अप आवर ओन प्रैक्टिस इन आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस तरह से हम क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन व्हेनेवर वी आर थिंकिंग ऑफ बिजनेस लाइक आउटसोर्सिंग. सो आई थिंक धवल जी डेफिनेटली हमको हेल्प करने वाले हैं. इसके बाद भी ही वुड बी अवेलेबल अगर किसी को भी किसी तरह के हेल्प चाहिए व्हाइल डूइंग एनी सच काइंड ऑफ वर्क. और आई थिंक ओवर टू यू धवल जी. Yes, thank you, Ruchi ji, for the welcome address, and thank you Jaipur ICI for inviting me all the way from Rajkot to speak at your branch, and thank you all the participants for coming to this session. I can see 50 participants right now, so yes, that's true. That is the demand of the current scenario, that we need to explore new avenues for our chartered accountant practice. So I welcome you all. It will be a really practical, I would say, session where I will be sharing my experience. मैं यहाँ पे आपको मेरा जो experience है last 10 साल का, वो जो कि सक्सेस फेलियर मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं, मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस सेशन, राइट? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Okay, anybody can confirm if my screen is visible to you? Yes, it is. Okay, perfect. So in today's session I'm going to cover everything about, like, I will be touching base all the aspect you have in your mind, like from let me give you the overview. Let's see what we are going. So पहली चीज हम देखेंगे कि why outsourcing practice, हम क्यों करें outsourcing to the US, why we should outsource our services to maybe USA or Australia clients. First thing that we are going to see, right? Second we are going to see is कि myths है यहाँ पे, कि बहुत सारे myths है जिससे हम start नहीं कर पाते, success नहीं मिलती है, तो उसका क्या reasons है वो हम देखेंगे. Third and most important aspect is skill alignment. See, यहाँ पे as a CA we are already skilled, we just need to align our skills to match the requirement of those clients who are sitting outside India, right? Or the most important aspect है वो है where to start. Everyone has the main question they need is where to get the leads. हमें lead कहाँ से मिले, हमें client कहाँ से मिले, right? And मेरे लिए जो most important aspect है जो मैं last में cover करना चाहूंगा, or 50% of my energy will be focused on proposal writing secrets, and in that we will be seeing practical proposal writing by our chartered accountant friends and how they can improve on those areas, right? So like in my last 5 to 6 years I have reviewed more than 500, I would say, proposals, and I know where the people are not doing mistakes. So we will be seeing that as well, and that is the, I think, most important part, because if you know everything else theoretically, but if you don't know where to differentiate your approach, then it is not going to give you any results. So friends, we will be seeing a lot in this area today.
So first thing, let's understand why you are here. Like we can see there are, close to more than 70 participants here from Jaipur. So why, friends, why you think you should diversify your CA practice? If you can tell me or respond me in comment section, friends, let's make it interactive so that it adds more value to you as well, right? At the end of the day, like, you will be getting the CP as I can see everyone is inputting their membership number, so CP will be there. No worry on that part, friends. But I want to make this, as far as interactive as possible, because although, see, I am sitting remotely in Rajkot here, but think me as I am sitting right in front of you, and that is essential. In outsourcing, what we do, we just do providing services, but to the overseas clients, rather than, there is no such difference in outsourcing practice or traditional practice. It's just this client is sitting somewhere else and we are working remotely, right? We are not going to meet them, or maybe meeting them after few years, right? So friends, please tell me why you are considering to diversify your traditional practice. Like, what are the results you are currently facing in your practice? Yes, I need answers, guys. You can type in the chat section. Okay, anyone? Okay, so, like, while waiting for that answer, let me cover what I have listed down from my own experience and what I have heard till now from my CA colleagues, right? So, like, one of the problem I see in everyone is facing right now, although they might not realizing it, but I know this is a problem. Like, the first thing is fees is being charged on per assignment basis. So friends, I will tell you what is the problem in that. Like, you have committed your services to your client on maybe GST return filing, income tax return filing, and maybe auditing as well, right? But after performing that task, आप जब भी वो रिटर्न फाइलिंग या कंप्लायंस करते हो, तभी आपने देखा होगा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है. फ्रॉम गेटिंग द प्रॉपर डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, आपको अगर वो स्कीमा इश्यू नहीं हुई, उसके लिए वेट करना पड़ता है. कुछ अपडेट आ गया, कुछ उसमें एरर आ रही है. जैसे अभी हमने देखा कि यूडीन जो टैक्स ऑडिट के अपडेट करने में बहुत सारी एरर्स आ रही थी, तो मतलब आउट ऑफ 63 or 4 cases you might be facing issue in updating UDIN income tax side, right? So you will be wasting a lot of time in setting the grievances and what not, right? There will be technical errors like DSC में कुछ error आ गया, कोई सॉफ्टवेयर में error आ गया, तो आप end up करोगे कि like आप at the end of the day you will like, आपने बजट रखा होगा कि मैं 1 या 2 घंटे में ये रिटर्न फाइलिंग या कंप्लायंस कर दूंगा, लेकिन आप कभी कभी देखोगे अपना आधा दिन भी चला जाएगा, पूरा दिन भी चला जाएगा. So we are charging on assignment basis, right? So that is the problem. So yes, the replies, so that is good, really appreciated for whoever has given the reply. So we will see that first. So like Ruchi ji is saying paying capacity of India capacity is low. Yes, that is true. Like, Indian customer has their limited budget, because for them this is this compliance, whatever we services we provide for them, this is just compliance and not part of their business. And that another reason for that is also because we are not adding any value. Like, our other services, our core skills are not utilized, friends. We will be seeing that. So for new type of exposure, yes, Arif is saying for new type of exposure and fee structure, yes, that's true. Yes, this is the need of the hour. International market is bigger, yes, and market is also improve us. Exactly. Okay, Sonika is saying she is now a mother and want to start some work from, yeah, his own, her own setup, so that is good. Yes, future of traditional practice is uncertain, you are right. Yes, good. So like, you all are understanding it in the right perspective, friends. But now I will cover it in the this through this presentation, and see the level of fees what we are charging compared to the efforts in compliance we are putting for them, right? So friends, you must have seen, like, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्लाइंट के लिए आप कितना वरी करते हो कि सर आपको जीएसटी फाइल करना, अदरवाइज ये पेनल्टी लग जाएगी, आप प्लीज मुझे डेटा दे दो. आप for the business you are thinking so much for their compliances, for their auditing and stuff like that.
पर आपको कितनी फीस मिलती है। तो वो एक अभी यहाँ पे गैप है। तो ये एक गैप की वजह से आपका जो पूरा, देखो, एज अ प्रोफेशनल वी हैव लिमिटेड बजट ऑफ आवर्स, लाइक see our commodity is time. We are not manufacturing or trading business, right? Our time is commodity. And if you are inputting a lot of efforts in getting those little fees, it's a problem, right? So also there is a constant change in law. आपने देखा होगा कि constantly जीएसटी में चेंज आ रहे हैं, बहुत सारे अदर एरियाज में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो आपको अपडेट करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। See, there is no problem in getting updated yourself in these updates, right? But the thing is, it's not adding any skills. Just knowing those change deadlines or change formalities is not adding any skills to you guys. World are changing in the, like, big data is coming, cryptocurrency is coming, but our clients are not upgrading themselves. They are doing the business same way they are doing 10 years before, right? So they have no skill upgradation required on that servicing part, right? So that is the problem. And see, due to this change in laws, you must have observed, आपको बहुत सारे client के call आ जाते हैं कि सर ये जीएसटी में थोड़ा चेंज हुआ है, तो हमारे बिजनेस ये इनपुट क्रेडिट में कैसा आपका हमारा ये ले सकते हैं। तो आप देखोगे आपने फीस कोट कर दी है ऑलरेडी, फिर ये चेंजेस आ गए और आपने फिर भी बहुत सारे नॉन चार्जेबल कंसल्टिंग दे रहे हो ओवर द फोन क्लाइंट को, और वो फोन भी कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई स्केड्यूल हो, क्लाइंट आपके ऑफिस में भी कभी कभी आ जाता रहेगा। you must have seen that, right? So that is one of the problem. And see, limited upsell of services, as I told you, once you tell the client that I can help you in your cost management, I can analyze your costing, I can improve your processes, I can automate most of the stuff for you, and he will say that I am not interested in any of the services, I just need my minimum compliance done by you, right? He is not that maybe, I'm not saying all the clients are not dynamic, that they are not valuing our other services, but most of the cases, they are the same. They don't want our other services, and core skills as a CA is not utilized. So you must have, like, observed, like, in our syllabus we have learned a lot of about other aspect other than just I would say return filing and compliance and auditing, but none of them are being used in actual life, right? And that is the reason why there is no scope for skill upgradation. For example, currently bookkeeping for a crypto transaction is like a boom, like it's a demanded aspect in current scenario, because a lot of foreign clients are dealing in cryptocurrencies in a big way. So this is a new opportunity. See, when something new comes, it's a good opportunity for freshers to step in. Friends, please understand. But here the clients are doing the business same way that they are doing maybe a few decades ago, like maybe 5-10 years ago. They are doing it in the same way, right? Okay. And as someone has rightly said, there is a less and less empaneled work, and also, like 80% of the services which we are giving can be done by a non-qualified consultant as well. You must have seen in your city that return filing is done, GST compliance is done, not only by CS, but maybe BCom, semi-qualifiers and whatnot, right? So competition is rising. So you are compelled to charge less and less fees, friends, right? So that is one of the problem. And see, there are many others. You can keep on adding based on your own, experience and stuff like that. But these are the reasons why you should diversify your practice or consider your practice, right, friends? So now coming to like myths about outsourcing practice, like if you already know that you should diversify, then why you are not diversifying to overseas clients? Friends, please, if you can tell me now that what is holding you back from starting over servicing to overseas client, giving your services to overseas client, what is holding you back, right? So please tell me that, and we will try to cover in a structured way later on. But if you can share your experience, and friends, please don't say that you don't have leads, or you don't have clients, or you don't know how to get clients, because that is a there's a problem, but we can cover it in another slide. Other than that, what is holding you back, friends, in trying this area?
yeah, if you can input those thoughts, then I can give you more insight. So we have now 90 participants. Welcome, whoever has joined late, but we are just starting on the core area, a core topic. So don't worry. So here we are trying to see what are the myths, or what are the points which is holding you back from starting these services. Okay, so local tax and accounting laws of clients countries. Yeah, so one of the, like, Nitin has replied, thank you Nitin for that. So see friends, yes, that is true. Skill, exactly, skill and knowledge, and yes, that is main hurdle everyone is facing. See friends, now I will tell you one thing. uh Finance and accounting operations, okay. See friends, tax is different in each country, I don't deny that, but there is nothing like accounting laws. Accounting is just done by generally accepted accounting principles, and we are expert in that, friends. So the starting point can be your basic services, and later on you can add on services, and add more skills to your portfolio and add on those services, right? Okay. Correct. Okay, friends. So yeah, so let's cover few of the myths. See, you might not be getting it. It might be back of your mind. आपने बोल नहीं पाते हो, मतलब आप, you cannot realize that this is holding you back. But friends, I know from the discussions with many CA colleagues, what are the holding points or hurdles everyone see. And see, the first is the capital expenditure. When we say KPO, starting a KPO or doing outsourcing services, we think of a big KPO, which is having a good infrastructure, good computer system, and stuff like that, friends. But see, in this industry is not just about big clients and big KPOs. There are a lot of, like, small and medium businesses who are willing to connect with small and medium service providers across the globe, right? It's not that just big player like Infosys can have their KPO, or some large KPO in your city as well as some other cities you must have seen. They can only have the business, they have the opportunity, they have the funding for their marketing. It's not like that, friends. You can start from your existing setup without incurring any capital expenditure. You just need to have the right approach and right strategy, right? So we will be covering that, but capital expenditure is not something that should hold you back. And someone says it's a good efforts and big time to set up this industry for yourself. So friends, this is also not true. With the right strategy, you can get the result in 3 to 6 months time frame, right? So it's not that true. And also, like, it's not needed that you visit those countries actually to get the work for yourself. So this is not an hurdle, friends. uh, Another is, like, every CA, like, we are so much conservative that when some opportunity comes to our mind, we first thing that comes into mind is, this is allowed, is this allowed? No, 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 we don't want to do this because that might be create problem. Nothing wrong in considering professional ethics, in diversifying your practice, but friends, it's, your CA degree is your asset, it's not a liability, friends. So you should take care about everything. You should not do marketing and advertising and stuff like that, but there are other avenues which we'll be going to see in the next slides. But this is not an hurdle which you should hold you back. Okay. And someone rightly said lack of skills. So yeah, there might be some lack of skills, but it is very easy to mitigate. We can very quickly align ourselves to those skills which are required by clients overseas. Language problem, friends, this is important. Like, friends, out of 95 we have in the room right now, I am sure at least few of them have back in their mind that we cannot speak fluently to no overseas client, and we might not be able to do this work due to that reason. See friends, from my English you must have seen that it is not that much fluent, but I am able to do my work, right? And I will tell you the reason why. See, US client when visit India, for example, for a tourist purpose,
and he is in the Agra. Visualize this, friends. So please understand here. So while getting some services or buying some food or buying some garments, he will not, he will not speak fluently. He will use small sentences. He will be slow in pace while speaking his requirement, right? His work done from those vendors easily. Same way, guys. He wants his, the cost at which he will be getting these services will be 1/10 of what he is used to pay in their countries. So they will be slow language. They understand that language may not be fluent, but the skill is there, right? And friends, from my experience, I will tell you, I have observed that clients response is that US clients and Australian clients response is that after paying 10 times what they used to pay, like Philippines or Indian service providers, like they might be paying 10 times more in USA, but they are not getting the result or the same level of expertise from what they get from the Indian freelancers. So यहाँ से उसको सिर्फ इतना नहीं है कि इसको कॉस्ट कम हो रहा है उसका सर्विसेज का, उसको अच्छे एक्सपर्टाइज भी मिल रही है फ्रेंड्स, तो वो उसको एडजस्ट करेगा अपनी लैंग्वेज, वो इतना फ्लुएंट नहीं रखेगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है. Another question every time I get is, is it scalable, is it long term? Like everyone says that this is can be like, you can try, you might get a couple of clients and then it is all, you will not get more success in that. Friends, this is not true. If you are consistent in the approach, do it in a, like if you do it in a proper way with the right strategy, definitely you will scale on this practice, and you can build a long term client base, as I have done since 2012, I would say, right? So these are some myths I would like to highlight before going to other core areas of this session. And friends, please understand here, due to these myths, we are not grabbing this opportunity. Other countries, I would tell you, the Philippines is, taking a huge pie of this market, of this industry, I would say. Not just accounting and finance, but every skill area. So Philippines is growing big. So friends, we as a CA need to grab this opportunity before someone takes the lead and gets most of the client. We have the potential. Like, I can tell you that if each of the practicing CA start this approach of outsourcing practice, they can all get work. There is no limit. It's a huge industry, I would say, as someone rightly said at the beginning in the chat, right? So friends, having said that, let's first see skill alignment part. And in that also, I will tell you, there are two paths which you can take. See, for someone who is having already a team, right, there are two paths here. So someone who is good at handling team, who is already having a team and infrastructure, can opt for basic services like accounting and taxes, and they can start with that, right? Even a single member or small team also can start with that. But I will tell you the other option, and you will yourself can, आप अपने जो skill set है, अपना जो comfort zone है, उसको देख के आप इसमें से दो में से एक पाथ सेलेक्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट पाथ क्या है सर? तो आपका अकाउंटिंग जो बेसिक हो गया, और टैक्सेशन उसके बाद आपको एड ऑन कर सकते हो. तो उसमें आपको क्या होगा, $10 पर आवर के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लिटिल लेस एज वेल, राइट? सो आपको वो यहाँ पे काम मिल जाएगा. तो आपको फॉर एग्जांपल टीम ऑफ 20 है, तो पर आवर मतलब पर डे आप देखोगे तो इतना पूरा बिलेबल नहीं होता यहाँ पे. प्लीज फ्रेंड अंडरस्टैंड, अगर आपको एक क्लाइंट, अपने पास 20% का टीम है, अगर वो 8 आवर्स के शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पर डे बिलेबल हो जाएगा क्लाइंट को. इट मे बी 50%. 50% इज अ गुड थ्रेशोल्ड. सो आपका 80 आवर्स फॉर एग्जांपल काम कर दिया आपने एज अ टीम, तो आपको वहां पे $800 फॉर एग्जांपल पर डे मिल गए, राइट? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि कौन सा पाथ आपको चूज करना है. फिर लेकिन उसमें आपको वो अर्निंग में आपको टीम का एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अगर कोई है कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो उसको निकालना है, राइट? जबकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, मैं जब भी बोलता हूँ टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो सीए कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हो गया एक्सेल का ऑटोमेशन थ्रू वीबीए,
एक्सेल का कोई टूल बना दिया, जो बैकएंड में कोई VBA से कोई काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर लाइक जो मैं करता हूँ. In my main focus in this area is I first start a client with Excel automation services, and later on I convert them into, I give accounting service as an add-on, right? So here from 20 to $100 or more as well, right? So इसमें बहुत सारे हो गया, जैसे कि आपका डेटा विजुअलाइजेशन हो गया पावर BI से, जैसे आपका कोई पाइथन से अगर कोई आप टूल बना देते हो, वेब बेस्ड टूल, तो वो भी आप कर सकते हो. फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अच्छा हम एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे कैसे करते हैं. तो उसमें आप 1% का भी टीम है तो भी आप उसमें उतना ही चार्ज कर पाओगे. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं 4 घंटे काम करता हूँ एज ए टेक्नोलॉजिकल पर्सन, तो भी मैं $400 का चार्ज करूँ, वहां पे $800 हो गया. लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा ही एक्सपेंस हो जाते टीम के और वो सब, यहाँ पे वो एक्सपेंस थोड़े कम रहेंगे. तो दोनों इक्वल पाथ है. आप देखोगे अगर यू आर यंग, यू आर टेक्नो सेवी, you can quickly learn new skills, then you should take the path of technological services. Otherwise you can take our core skills, which is accounting and taxation, right? So now skill alignment, so one question is there, let me. Okay, so yeah, Pradeep is saying this program is only 2 hours, please guide us on how to get work. I will quickly come to, like just 30 minutes, please guys, give me 30 minutes to give the introduction. We are just we will be starting that very soon. Sure, sir. Please take your time. Yeah, no. That is the agenda. Like that is right. We need to focus on the getting the work from the client because that is the demand. And Arif is saying I develop full-fledged software in Excel, which can be used in different cities, server based. Okay, great, Arif. So yeah, so that is your skill. You can give these services to the overseas client. So now coming to the skill alignment part. Now see, friends, just saying to an overseas client that you are already doing bookkeeping for Indian clients in Tele or Miracle, and please give me your work, I will do bookkeeping for you, will not give results. Though those clients might be using QuickBooks, Zero, Myobi, Zoho, those software, right? So you need to align yourself. Now friends, each of this software, वो वहां पे आपको एक उसकी वेबसाइट अगर विजिट करोगे तो एज एन अकाउंटेंट का एक वहां पे मेन्यू रहेगा फॉर अकाउंटेंट्स, या प्रो एडवाइजर प्रोग्राम, या पार्टनर प्रोग्राम, राइट? तो वहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वहां पे उसको सर्टिफिकेशन होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहती है. अगर यूट्यूब में भी आप देखोगे तो बहुत सारे इसमें मिल जाएगी आपको कैसे इसमें ऑफिशियल ट्रेनिंग मिल सकती है फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर देमसेल्व्स, राइट? सो आप वो कर सकते हो. फिर ये एक देखो सीपी ऑनलाइन एकेडमी है. मैं आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे अपना सीए के जैसे वेबिनार्स होते हैं वैसे ही वहां पे सीपीए के लिए जो वेबिनार्स होते हैं, तो मैं आर्काइव वेबिनार्स में हूँ अभी फिलहाल. तो जो भी यहाँ देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये सब वेबिनार्स देख सी फ्रेंड्स, वी हैव टू अलाइन आवरसेल्व्स. वहां पे अभी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि देखो हाउ टू रिटायर इन द 0% टैक्स ब्रैकेट. सो वहां के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट रहेगा तभी तो ये वेबिनार किया है. जैसे कि अपने सी के जो रिक्वायरमेंट है अभी डाइवर्सिफाई देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जबकि ये वेबिनार हो रहा है यहाँ पे, तो वैसे ही वहां पे भी जो करंट के जो सिनारियोस है उसके बहुत सारे आपको वेबिनार्स मिल जाएंगे जो आपको गो थ्रू करोगे तो आपका नॉलेज अलाइन हो जाएगा वहां की रिक्वायरमेंट से, राइट? तो फोकस ऑन ग्रोथ, बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विसेज, तो वहां के क्लाइंट के लिए ये किसी ने वेबिनार लिया है, राइट? जो हाउ टू प्रोटेक्ट योर अकाउंटिंग फ्रॉम साइबर अटैक्स, तो यहाँ पे स्किल नहीं बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस मैनेजमेंट की भी मिल जाएगी, राइट? तो ये सब आप अगर गो थ्रू करोगे पीरियोडिकली तो आपका वहां पर स्किल अलाइन हो जाएगा कि और रिक्वायरमेंट भी समझ पाओगे कि वहां के क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, राइट? तो ये एक चीज हो गई ना. इंट्यूट सॉफ्टवेयर बनाता है उसका भी एक रिसोर्स सेंटर है फॉर अकाउंटेंट्स. ये देखोगे कोई ना रिसोर्स पे अकाउंटेंट्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे वेबिनार्स सब मिल जाएंगे. ये कोविड रिलेटेड स्पेसिफिक है कि कैसे लोन्स एंड कैश फ्लो, ये पीपीपी यहाँ पे यूएसए में एक प्रोग्राम है जो कोविड के अंतर्गत यहाँ पे लोन्स दे रहा है. ये कोई पेरोल को प्रोसेस, पेरोल का फाइनेंस कर रहा है, पे चेक प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं. तो ये सब आप देखोगे तो अभी करंटली वहां पे क्या चल रहा है,
अगर वो आप समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, तभी तो क्लाइंट को आप रिक्वायरमेंट को सर्विस कर पाओगे। तो यहाँ पे इतना गो थ्रू करोगे ये सब वेबसाइट में, ये पीपीटी आपको शेयर करूंगा, तो आप ये इसका लिंक्स में पीरियोडिकली देखते जाओ। फॉर्म्स ऑफ द फ्यूचर वो सिमिलरली की एक वेबसाइट है, यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं फॉर अकाउंटेंट, राइट। See, one of the blog article, growth can be overrated, why you should build a lifestyle practice. So यहाँ पे प्रैक्टिस मैनेजमेंट देखो, ये सब जो एनेबलर्स है, जैसे कि क्विक बुक्स हो गया, जीरो हो गया, वो अपने जो अकाउंटेंट फ्रेंड्स है उसको उसको एनेबल करने के लिए बहुत सारी जस्ट सॉफ्टवेयर देके या ट्रेनिंग देके खत्म नहीं करते हैं। आप कैसे अपना एडवाइजरी रोल इंक्रीज कर सकते हो, आप कैसे प्रैक्टिस मैनेज कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज वो लोग डेवलप करते हैं। अगर आपको उसको पीरियोडिकली देखोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा वहां का बिजनेस सिनेरियो का, राइट। तो आप ये रेगुलरली गो थ्रू करो प्लीज फ्रेंड्स। जैसे आप ये सीपी आवर्स कर रहे हो, वैसे ही थोड़ा यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सब साइट्स में रेगुलरली विजिट करो पीरियोडिकली। मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं डेली करो, लेकिन वीकली 1-2 घंटा कर लो, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, चलो कुछ सुना है ये पेमेंट प्रोटेक्शन, पेरोल प्रोटेक्शन कुछ होता है यहाँ पे, तो फिर आप कनेक्ट कर पाओगे, समझ रहे हो ना। आप जब भी उसको अप्रोच कर रहे हो तो समझ पाओगे। कि फ्रेंड्स देखो, ये जो फॉरेन क्लाइंट्स है उसका कभी ऐसा स्टैटिक रिक्वायरमेंट है कि एवरी क्लाइंट वांट्स जस्ट देयर एंट्री ऑफ एक्सपेंस बिल, देयर इनवॉइसेस टू बी एंटर्ड इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ऐसा कभी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट रहता नहीं है आउटसोर्सिंग क्लाइंट्स में। उसका कोई स्पेसिफिक सिनेरियोस रहेगा, तो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन एवरी पर्सन इज डिफरेंट, यू नो, लाइक वहां पे यहाँ पे अगर देखोगे इंडिया में आप, तो जैसे 90% तो सेम आप अगर नॉलेज है तो वो आप कर पाओगे सर्विसेज, ये यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहेगा। कीप योरसेल्फ अपडेटेड, राइट। अभी टेक्नोलॉजिकल पार्ट में देखें, एक्सेल जैसे मैंने बोला कि एक्सेल के हायर स्किल्स, पावर बीआई हो गया, तो किसी यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है एक्सेल इज फन फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। और मैं इसको ऐसे फॉलो करता हूँ जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्सेल केस स्टडी, प्रैक्टिकल केस स्टडी, एंड उसने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखे है। देखो सर, आप देखोगे कोई भी एक एरिया आपका जो इंटरेस्ट, देखो एक्सेल पावर पिवोट प्लेलिस्ट, राइट। पावर पिवोट में अगर आपको ये जो बिग डेटा में जो काम आता है, तो उसके 25 वीडियो यहाँ पे डाल दिए जो सभी प्रैक्टिकल रहेंगे, डेटा सेट के साथ आपको देंगे यहाँ पे, राइट। देखो डैशबोर्ड बनाना है अगर आपको, तो उसके वीडियोस दे रखे हैं। ये पावर क्वेरी के पूरे वीडियोस दे रखे। पावर क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इन डिमांड स्किल है अभी, राइट। सो हर एक चीज के पावर क्वेरी के दे रखे, देखो अगेंस्ट, तो वो भी पावर बीए का यहाँ पे पूरा 55 वीडियोस का सेट है। तो ये आपको अगर ये स्किल्स एक्वायर करनी है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हो। अनदर थिंग, जैसे मैंने बोला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेंड्स, तो ये एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि सेल्सफोर्स है, उसका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग है। देखो फ्रेंड्स, वी कैन बी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीआरएम है फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीआरएम सिर्फ मार्केटिंग लोगों को काम आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने क्लाइंट के लिए काम किया था अभी यूएसए के, जो एक लॉयर फर्म थी, मल्टी लोकेशन मल्टी पार्टनर, लेकिन उसका पूरा जितने भी केस उसके रनिंग है इन वेरियस कोर्ट्स, इन वेरियस सिटीज, तो हमने उसका पूरा रिपोर्टिंग कर दिया कि किसका हियरिंग कभी है, उसके लिए कितना प्री प्रिपरेशन कभी किसको करना है। पूरा ये जो रिपोर्ट सेटअप है जो डेली उसको, उसके लॉयर्स को, उसकी टीम को मिल जाता है, वो हमने सेल्स फोर्स में बनाया है। उसका एक ऐप हमने एड ऑन यूज किया था, लिटिफाई। तो देखो फ्रेंड्स, अगर ये सब स्पेसिफिक स्किल्स अगर आपको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग फ्रीली मिल जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल, जो 75 आवर्स का ट्रेनिंग कोर्स है, राइट। तो ये आप कर दोगे तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अल्दो यहाँ पे चाहिए तो थोड़ा चार्ज करते हैं ये लोग, but training is free. You can start training yourself, right? If you are interested in this area, database administrator, it's also in demand. अगर और भी कोई आपका स्किल है जो जो आपको लगता है कि कोई हाई डिमांड है और उसका अच्छा आपको पर आवर रेवेन्यू मिल सकता है, तो ये देखो गवर्नमेंट के भी थोड़े इनिशिएटिव है विद IIM एंड IITs, दे गिव दिस ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। दे दो वेबसाइट है जो आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईएम के प्रोफेसर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वाले
प्रोफेसर्स यहाँ पे जो ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, राइट? सो यू कैन गो थ्रू दोस कोर्सेज, दिस आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन गेट द स्किल्स. तो आज की, see, in this era, getting any skill is not, like hard. You can easily, if you are interested, you can easily find it out. And और भी है, देखो आप देखोगे कोई भी अगर स्किल एक्वायर करने में, एक दो एग्जांपल कि आपको, जैसे मैंने बोला एनेबलर है, अगर क्विक बुक्स एक एनेबलर है बुक कीपिंग के, तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. फिर फोरम्स मिल जाती है. कोई भी अगर एक्सेल में देखोगे, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी में बहुत एक्टिव था कि जब भी मेरे पास काम नहीं था इनिशियल स्टेज पे, तो मैंने वहां पे लोगों के प्रॉब्लम सोल्व कर दिए. तो उससे क्या हो गया, मुझे क्या अभी डिमांड में है, क्या लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग मिला, राइट? क्विक बुक्स में भी आपको फोरम मिल जाएंगी. तो ये फोरम में फ्रेंड्स, आपको सिर्फ अगर आप नॉलेजेबल है तो आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप वहां पर सीख सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके क्या सॉल्यूशन सब सजेस्ट कर रहे हैं, राइट? आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो फोरम्स हो गया. वैसे कोई अगर यूट्यूब के कोई या कोई वेबसाइट मिल जाती है तो उसको आप फॉलो करो. तो फ्रेंड्स, ये कोई हर्डल नहीं है, स्किल अलाइनमेंट आप इजीली मिल सकता है अगर यू आर इंटरेस्टेड एक्चुअली, राइट? So having said that, friends, most important part now, outreach channels. Now before starting, you know I will tell you two things. First, every time you heard about any channel, be it LinkedIn or any of the channels, you see, most of the time how we search about anything, we do YouTube search or we do Google search, right? So in these areas, like someone is having interest in LinkedIn will, criticize every other platform out there, right? Because they want to create the viral videos, so they will criticize something and they will favor something. But friends, I will tell you one thing, each of this channel works very fine, right? And I have already tried each of these channels and I have got success. I will be sharing my stories in these outreach channels and how you can do this as well. But friends, please understand, don't believe everything that you find online. Like they want to rank themselves up in the YouTube search or Google search, so they will be doing, so making it more dramatic or criticizing something, favoring something. They have their own interests. Affiliating marketing is going on, friends, please understand. So if you heard anything about negative about anything, don't take it just right away. Take, see yourself if it is getting result, find genuine advice and judge them, right? Those channels. So one thing is that, so let us see one by one those outreach channels, right? So first is job boards. So in job boards, I include many aspects, like it can be LinkedIn jobs. So you must have seen now in LinkedIn, startups across the globe are posting their requirements and they are posting remote jobs as well, right? So you can go for those. So I will tell you, the second thing is, always friends, there is always a channel specific aspect you need to consider. I will tell you, like if you are approaching startups through LinkedIn jobs, right? So your LinkedIn profile needs to be properly filled up. It needs to be set in a some way. So always friends, try to get guidance on how to properly utilize that channel from someone. And second thing I will tell you later on, and that is common with everyone, do you remember proposal writing secrets? So that in that thing, it applies to every channel. वो हर चैनल में कॉमन है, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म का एक स्पेसिफिक यूनिक स्ट्रेटजी या अप्रोच रहता है. तो वो आपको कहीं से गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, यूट्यूब या गूगल से, राइट? तो आप वहां से ले सकते हो. जैसे कि जॉब बोर्ड्स हो गया, एक कम्युनिटी है एंजल लिस्ट, जहाँ पे स्टार्टअप्स का कम्युनिटी है, जहाँ पे वो सब अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं, राइट? दे आर लुकिंग फॉर सर्विस अक्रॉस द ग्लोब. और अपना हो गया फ्रीलांसिंग वेबसाइट, लाइक अपवर्क हो गया, राइट? तो वहां पे भी आप कर सकते हो. तो ये हर चीज का एक स्पेसिफिक यूनिक वे है, जो मैं हम हर एक का मैं डिस्कस करूंगा. फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में कैसे हो गया, यूट्यूब, लिंक्डइन हो गया, अगेन ट्विटर भी हो गया, और बहुत सारे अदर सोशल मीडिया है. तो यहाँ से भी रिजल्ट मिलता है. तो एक चीज हो गई कि आपको कैसे ये सोशल मीडिया का यूटिलाइज करना है. देखो यूट्यूब है, तो कैसे अच्छे वीडियो बनाने हैं जो आपको रिजल्ट दे पाए, उसका एक यूनिक वे है, राइट? तो वो एक स्पेसिफिक
चैनल स्पेसिफिक थिंग हो गई, और अदर एस्पेक्ट हो गया जो आपको कैसे उसको कॉमन स्ट्रेटजी है उसका हम देखेंगे। तो ये सोशल मीडिया हो गया, जॉब बोर्ड्स हो गया, कंटेंट फ्रेंड्स, यू कैन राइट कंटेंट लाइक ब्लॉग आर्टिकल, आपका medium.com में आप खुद आर्टिकल वहां पे लिख सकते हो, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आपका खुद का ब्लॉग लिख सकते हो, राइट। तो ये कैसे लिखना है वो मैं आपको बाद बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आउटरीच चैनल को लिस्ट डाउन करता हूँ, राइट। फिर हो गया ईमेल आउटरीच। तो ईमेल आउटरीच में क्या हो गया कि आपको जैसे कोई बोलते हैं कि कोल्ड कोल्ड, आपने ये सुना को कोल्ड ईमेलिंग, राइट। बट फ्रेंड्स इसमें भी एक वे है जो आपको अप्रोच करते हैं, जैसे कि रादर देन emailing thousands of clients, आपको कहीं डेटाबेस मिल गया कहीं पे, तो आप thousands of emails ऐसे स्टैंडर्ड भेज दोगे कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 years of experience और ये मेरी प्रोफाइल है, आप देख लो, तो ऐसा कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। रादर ये शुड, जो भी मैं अभी स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ वो ये है कि आपको क्या करना है कि आप एक या दो क्लाइंट्स को फाइंड आउट करो जिसको रिक्वायरमेंट है। मैं अपने लिंक्डइन में या कोई एंजल लिस्ट या कहीं पे भी आपको उसने देखा होगा उसका रिक्वायरमेंट, तो आपको एक कस्टमाइज वहां पे उसको ईमेल लिखो कि सर मैं आपकी ये आपका ये जो बिजनेस है इसमें ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो ये सब एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको करना है। लेकिन अभी आप देखो कि ईमेल आउटरीच भी एक वे है टू गेट द रिजल्ट, राइट। सो जैसे फर्स्ट हो गया जॉब बोर्ड्स, जिसमें फ्रीलांसिंग वेबसाइट हो गई, लिंक्डइन जॉब्स हो गई, आपकी एंजल लिस्ट कम्युनिटी हो गई, राइट। सोशल मीडिया तो आपको सबको मालूम है, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया। कंटेंट जो कि ब्लॉग आर्टिकल आपके अगर वेबसाइट में है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो medium.org करके एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे लिख सकते हो। ईमेल तो सबको मालूम है, ईमेल आउटरीच है। फोरम्स है, जैसे मैंने बोला फोरम्स आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर गेनिंग नॉलेज एज वेल एज गेटिंग क्लाइंट्स। फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है फोरम्स वाला, कि आप अगर उसमें आपका ओपिनियंस दे रहे हो, सॉल्यूशंस दे रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 सॉल्यूशन दे दिए तो आपको 2-5 क्लाइंट मिल जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से वैल्यू एड कर रहे हो, डेफिनेटली क्लाइंट विल एज वेल, राइट। फिर पीआर एक्टिविटी हो गई। जैसे पीआर एक्टिविटी क्या होती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ आपको, कि जैसे यूएई में जब भी वेट आया तो मैंने देखा कि खालिद टाइम्स हो गया और भी वहां के न्यूज़पेपर है, वहां पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो सीए है, जो वहां पे ऑलरेडी थे या यहाँ से कर रहे थे ऑपरेट, वो लोगों ने आर्टिकल्स वहां पे पब्लिश करवाए। तो वहां से उसको रिस्पॉन्स मिल गया, चलो ये सीए अगर ये वेट के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गाइड दे रहा है न्यूज़पेपर में, फोरम या लिख रहा है, तो डेफिनेटली सी इट विल गेट रिजल्ट, राइट। फिर उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वे फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेरा भी एक एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे मैंने एक देखा लिंक्डइन में एक स्टार्टअप है जो उसका बिजनेस था टेबल रिजर्वेशन फॉर रेस्टोरेंट्स। वहां पे कैसे है, दुबई में आप देखोगे हाई एंड रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही आप जा नहीं सकना पड़ता, आपने अगर दुबई विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा। तो उसका एनेबलर है जो ये ऐप था, राइट। आपने कभी यूज भी किया होगा नोइंगली अननोइंगली, मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैंने देखा कि वो एनेबलर था फॉर रेस्टोरेंट्स। लेकिन जैसे क्विक बुक्स अपने अकाउंटेंट के लिए जो रिसोर्सेज दे रहा था, वैसे ही ये पर्टिकुलर स्टार्टअप अपने रेस्टोरेंट के लिए मेन्यू कैसे डिजाइन करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, प्राइसिंग कैसे करना है, उसके भी टूल्स ब्लॉग के थ्रू दे रहा था, राइट। तो मैंने उसको एक आर्टिकल भेजा कि चलो यूएई वेट आ रहा है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, तो आप ये आपके रेस्टोरेंट के लिए काम आ जाएगा, तो ये मेरा आर्टिकल है। तो उसने वो पब्लिश कर दिया, आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा शायद, यूएई वेट फॉर रेस्टोरेंट, राइट। तो ऐसा एक आर्टिकल मैंने लिख दिया। तो ये है पर्टिकुलर अप्रोच फ्रेंड्स। अगर आप मतलब कैसे ही पूरा कुछ भी लिख दोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक मालूम है कि ये ऑलरेडी कर रहा है एक्टिविटी, आप उसमें कुछ ऐड करोगे। अभी उसने ब्लॉग के ये आर्टिकल का ऑथर है जो सीए धवल पाऊ है, इसको आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये उसका लिंक लिंक्डइन का लिंक है, तो उसमें से रिजल्ट मिलता है। अभी उसका क्वांटम हम नहीं बता सकते, उसमें से 10 आ जाएगी 100 आ जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आप कर सकते हो फ्रेंड्स, और ये इजीली अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करोगे, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी उसमें, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज लिखी थी, देखो यूई वेट इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज आप रेस्टोरेंट के लिए सोचो, सभी बिजनेस को टाइम मिल जाएगा अपने लिए प्रिपेयर करने में, लेकिन रेस्टोरेंट को फ्रॉम मिडनाइट
जैसे कि 31 दिसंबर का पार्टी चल रहा है, उसको अभी जब चेंज हुआ डेट 1 जनवरी हुआ, तभी से जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है वो वेट एनेबल्ड करने पड़ेंगे. तो दे हैज टू बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? रेस्टोरेंट हैज टू बी प्री प्रिपेयर्ड देयर बिलिंग सिस्टम and everything with weight ready, right? So this is the thing they need to highlight to their restaurants. Otherwise the problem will be compliance part, right? So this is something, if you add value, they will definitely publish yourself. Now conferences, friends, conferences is as important. Now one of the conferences is coming up, in November, which is hosted by ICAI, which is World Congress of Accountants. Friends, please understand, it occurs every 4 hours. Last time it was in Australia. This time we are hosting this in Mumbai, right? So you can attend these conferences virtually as well as physically, right? So it is registration is already open, so you can participate in these conferences, and in that your contact details will be in touch with other participant, also sponsors. So it will give many insight, many networking opportunities to you guys. Please understand. Now conference is also unstructured. You cannot quantum that this will give you this type of result. But if you see last year, last 4 years back, when it was in Australia, more than 5,000 accounting firms across the globe was was participant, and at that time there was no virtual participation. This time we are lucky we have virtual participation, right? So please guys understand how much networking opportunity you will come across in attending those conferences, right? So I will tell you another example about conferences. Like my speaking journey started from attending a conferences in Ahmedabad. When I visited Ahmedabad ICI, I was not knowing. I was just communicating with the attendees, and one of which was like committee member, and he realized that this person have something to talk, and he gave me the opportunity. I never thought about speaking on these platforms, guys. Please understand. So conference give you like the result cannot be imagined. पहले से आप नहीं सोच. Next thing is digital marketing. Friends, please understand, when I say marketing, don't take me wrong that I am something advocating something which is not allowed. Please understand. Hold your nerves for this for some time. Like in digital marketing, friends, in digital marketing, if you search from, I can show you that as well in practical way. So let us visit Google from USA servers, right? So let me try to do that. Okay, so my browser is connected from USA, right? You can see USA is my current region. And if I see accounting, if I search for accounting here, you can see you can get a lot of advertising here, right? One thing, or let's say, see, hire a remote bookkeeper, build for small business, right? So currently we are seeing main. Let me try it from Australia. 1 second. I want to show what other people are doing right now in digital marketing. Okay, I think I am connected from Australia now. Okay, let me try one another country. I want to show you here. So I'm trying to find advertising on these keywords.
Okay, so currently I'm not seeing any advertising which I can give you good example, but the thing is, lot of firms from TA firms or accounting firms from India as well as Philippines are doing advertising on Google, right? So in that also, friends, please understand, there is a specific way how you should set up your goal advertising. So that can be done by a consultant, or you can learn it from somewhere else. I cannot teach you all those channel specific things, right? But you need to have the right strategy for that particular approach, right? But the example I was trying to show you was, वहां पे अगर आप देखोगे जो एडवर्टाइज आती है उसमें 50% जो अच्छी एडवर्टाइज होती है, वहां पे आप अगर उसकी साइट विजिट करोगे तो आप देखोगे वो साइट में कुछ नहीं रहता है, मतलब पूरा उसका जो उसको मैसेज कन्वे करता है वो वन पेज में रहता है, उसको बोलते हैं फनल, कि एक ही पेज में सब चीजें, उसमें मेन्यू मेन्यू अगर आप वेबसाइट किसी विजिट करोगे तो उसमें मेन्यूज रहेंगे, बहुत सारी लिंक्स रहती है। तो क्लाइंट, अगर आपने पे किया है $10 फॉर गेटिंग यू ऑन देयर वेबसाइट, अगर आपको 10 जगह पे भेज रहे हो तो उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन कि आपने सिर्फ फॉर्म रखा है फिलअप करने के लिए कि अगर आप यहाँ पे आए हो, आपको रिक्वायरमेंट, आप ये फॉर्म फिलअप करो, ये हमारी सब डिटेल्स है, ये सब हमारे की यू नो प्रोस्पेक्टस जैसे बोलते हैं, कोई पिच हो गया, तो वो सब इस साइड में किया होता है। तो एक ही फॉर्म रहता है, वहां पे क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता, रादर जस्ट वो सिर्फ एक फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो उसको बोलते हैं फनल, कि आप ऐसे नहीं कि आप हर जगह क्लाइंट को भेज रहे तो कंफ्यूज हो जाएगा और निकल जाएगा वेबसाइट से। तो अगर एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसको रिजल्ट के लिए वो लैंडिंग पेज अच्छा बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, फनल भी बोलते हैं उसको। तो ये अगर प्रॉपर वे से करोगे आप तो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप देखो, अभी अभी थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं, अभी हमने देखा फ्रीलांसिंग वेबसाइट, हमने देखा लिंक्डइन सोशल मीडिया में देखा, हमने देखा खुद का वेबसाइट कंटेंट में देखा, ईमेल कोल्ड ईमेलिंग देखा, फोरम्स देखा, न्यूज़पेपर या पीआर एक्टिविटी, अदर पीआर एक्टिविटी देखे, कॉन्फ्रेंसेस देखे, डिजिटल मार्केटिंग देखा। अभी आप ये मुझे बताओ कि आपने वर्क नहीं करता एनी ऑफ दिस, आपने सुना ही होगा कि ये कभी वर्क नहीं करता है, या आपने खुद ने ट्राई किया होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो आप दोनों में से कोई भी अगर आपने सुना हो या आपने ट्राई किया हो, रिजल्ट नहीं मिला हो, तो आप मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि ये जो नेक्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों रिजल्ट नहीं मिलता है, अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक थिंग, चैनल स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, जैसे कि यूट्यूब का टाइटल कैसे रखना है, उसको आपको कैप्शन सबटाइटल्स ऐड करने हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो चैनल स्पेसिफिक हो गया। लेकिन एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज। तो मुझे आप बताओ कि आपने ये सब चैनल सुने होंगे, आपने कभी ये सुना है कि लिंक्डइन से कभी क्लाइंट नहीं मिलता है? प्लीज टेल मी। या कोल्ड ईमेलिंग से आपको क्लाइंट नहीं मिलता है, या ब्लॉग आर्टिकल लिखने से कोई क्लाइंट नहीं मिलता है? अगर आपने ऐसा सुना हो या आपने ऐसा फील किया हो तो प्लीज राइट यस और नो प्लीज। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी plus participant we have. Okay, so Pooja is saying yes, आपने ये सुना है, yes. Okay, you can detail your experience, as detail as possible, because then only you will connect, because next 1 hour is very important guys for this session, जहां पे हम बहुत ही इन डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या जो है हम गलत कर रहे हैं और कैसे उसको सही किया जाता है। वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा जो हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, प्लीज। Okay, okay, so you must have heard or you must have felt that this never works, right friends? Now tell me one thing, if you are giving a proposal, yes, so Pooja has tried but has never received any work. Okay, so we will see what is different. Friends, please understand now, for giving services in accounting or bookkeeping, what you will do differently for each client, how you submit your proposals, please tell me. If I tell you that this is the client which is in requirement of your bookkeeping services, how you would approach them, what you will tell that that make the client give you the work, please tell me what you will write guys. For accounting assignment, what you will write in your proposal, it can be an email, it can be a proposal you submit, anything.
qualification experience. Exactly, Pooja Sharma is saying qualification and experience. Okay, anyone else? Okay, so right, you should write your qualification and experience, friends, but please understand here. See, everyone will say that profile, okay, profile will contain mainly qualification and experience, right? But please guys, please understand here, in the overseas market, your certification is not just the qualifier for you to get the work. Everyone is qualified, everyone is having certification from India, right? So what is that different thing that you will write? And that is to understand client, like in which industry he is, how you can add value in that particular scenario for the client. If you distinguish your proposal and customize it to the client's requirement, then only you will get the result, friends. Please understand, we will be seeing examples for that as well. But just writing on a 30,000 feet level, I am giving you this result, that just writing I'm a chartered accountant or I'm having a 10 years of experience will not give you any result, friends. And this is the biggest mistake I have seen our community members are doing, friends, please. So because it doesn't create trust, or it doesn't create authority in the eyes of the client. अगर आप इंडिया में किसी को बोलोगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो बस वहां पे काम खत्म हो गया, वो आपको काम दे देगा अगर आपको फीस का वो सब एग्रीमेंट हो जाता है तो। लेकिन ये ओवरसीज मार्केट में इट नेवर वर्क्स। दे आर नॉट लुकिंग फॉर सर्टिफिकेशन, दे आर नॉट लुकिंग फॉर डिग्रीज, they are looking for skills and understanding of their requirements, how you can customize your work for them. So that is the requirement here, guys, please. So uh, I will give you some examples, like for example real estate flipping business. In the US you have seen a lot of flipping business is what they improve it and they sell it, right? So this is the business model which many of have in the US, right? So in that you need to track project wise or property wise expenses and incomes, and then only you can easily say that this property fetch me this much profit. So for this business, tracking expenses property wise is important, friends, right? So you need to you know you need to outspoken about those thing, and you need to say that I understand you must be having this requirements and I can fulfill it by using location tracking or class tracking feature in QuickBooks. If you customize your proposal like that, then client sees you as an expert. Then client has trust that you are having the authority in this field. You can add some value to their businesses, right? Next, real estate rental business. So one of the thing there, real estate rental businesses, I call it as Airbnb. You must have heard about Airbnb, HomeAway. Those are temporary accommodation are given to the guest of their properties, right? So in that also, again, location wise tracking is important, right? Then only they will come to know about their property wise profitability. Another thing for this business is automation of Airbnb bookings to their QuickBooks bookkeeping software or any other software, right? So this Airbnb and QuickBooks can talk to each other through an app or through an API. It's easy to connect, and the accounting of revenue part will be automated. So you need to tell that QuickBooks has the feature which connects with your Airbnb feed, and all the bookings and bookkeeping for that will be done automatically. So if you don't say that, if you just say that I know I am a CA, I am having 10 years of experience, will add no value. But just writing this part will add 10 times more value. And even if you don't write qualification, it will give you result, right? E-commerce stores again. So now someone is having an Amazon store. So friends, like for big e-commerce guys, a volume of transaction will be huge on a daily basis. So no one is going to enter those bookings or sales manually on on the QuickBooks software. There is a connect with Amazon and QuickBooks which does it automatically. So you have to write that I know how to set up this. For SaaS business,
which is having, software as a service, they have different requirements of reporting. Like they need for them, the importance is the churn rate, how much customers are being retained month on month, what is the cost of acquisition through their advertising efforts, right? So cost of acquisition is important for them to know. So you need to tell that I can customize this report in the QuickBooks or accounting software itself, so that you can get it automatically from the software periodically to your email address. So I can set it for you. That is important to your business to know those things. So you need to be outspoken. You need to think from client's perspective, what their problem is, what their requirements is, and then only you will get result. So consultancy firm, again, consultancy firm having its own problems over there. Like they have billable expenses, they have employees who are logging hours, which they are getting paid by logging hours. So all this thing needs to be automated, and it can be done with the right feature, right? Multi-location stores, so can be restaurants, any chain of restaurants. Like in India, we also having seen this, maybe tea post or any chain of stores. It can be restaurant or otherwise, they have the different requirements. Like there may be inter-branch transfers. Those are not incomes for other store, but just inter-branch transfer. So you need to have that facility in the accounting package to accommodate those transaction, right? So friends, my point in highlighting this thing is, every client is different, and you need to customize your proposals, your emails, your blog articles according to the requirement of the client. Like in the UAE startup example, if I have just written an accounting proposal, like accounting, how the restaurants can do accounting, it will have added no value. But I seen the opportunity in UAE wait, I grab it and I implement it, and then only I can get result, right? So in each of these we have discussed, the one thing in common is having the right customized proposals. If you are writing blog article on your website, rather than just writing accounting as common, you can write on a particular business you think which is currently in demand. For example, currently in demand is, this crypto accounting. Crypto has a different kind of, transaction type. For accounting for this is in demand right now. If you write a blog article, if you create a YouTube video about that, if you share some expertise on somewhere, some forum, you will definitely get result, guys. Now this is unstructured way, right? All these channel except freelancing job sites are unstructured. So I cannot tell you that if you write 100 such blog article you will get 1,000 client. But friends, believe me, if you are doing it right, you will get the result, right? So please understand, guys. Having said that, let us first, like more in depth, right, cover what you your proposals or your articles or your in emails, right? So first, पहले आपको, मैंने जैसे बोला कि क्लाइंट का जो पेन पॉइंट है उसको आप एड्रेस करो आपके अप्रोच में. दैट इज द वन ऑफ द की थिंग व्हिच यू कैन डू टू गेट द सक्सेस, राइट? सेकंड, आप अगर आपका जो सॉल्यूशन है, जो आप अप्रोच सजेस्ट कर रहे हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करो थ्रू स्टोरीज. फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है बैंक रिकंसिलिएशन करना क्विक बुक्स में, तो आप जस्ट ऐसे बोल दो आई कैन डू बैंक रिकंसिलिएशन. आप ऐसे बोलो, उसको स्टोरेज थोड़ा क्रिएट कर सकते हो कि हैविंग 10 years of auditing experience, I am good at reconciling reports, and I can easily help you in this aspect. So जैसे सेंटेंस लिख दोगे कि I can do this bank reconciliation for you, तो आप इसको थोड़ा कोरिलेट करो विथ योर एक्सपीरियंस और सब अप्रोच यू आर डूइंग. जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन में हो जाता है कि आप उसको एक्सेल में लेके इजीली रिकंसाइल कर सकते हो, वन ऑफ द अप्रोच. तो आप ये बोल सकते हो कि आई कैन डू इट बीइंग एन एक्सेल एक्सपर्ट, आई कैन इजीली एक्सपोर्ट बैंक register, then reconcile with the and for you, right? So create stories rather than just writing plain simple vanilla sentences. Always try to achieve automation and process improvements. Friends, please understand. Now
when I say, I will give you an example as well. So one of the client of mine is a rental business, Airbnb. Remember, I have given you example. वो क्लाइंट का Airbnb के अलावा भी डायरेक्ट गेस्ट यूनिट्स में स्टे करते हैं, राइट? तो उसका बिलिंग है वो मैंने ऑटोमेट किया है ये एक्सेल में। तो मैंने ये सजेस्ट किया क्लाइंट को, वी कैन डू दिस वे। तो उसने वो इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए मुझे कंसल्टेंसी फीस दी, राइट? तो ये एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिक उसमें पहले डिटेल दे रखी है, गेस्ट नेम हो गया, ईमेल, फोन, वो सब इनपुट्स है। तो ये सेल है, राइट? कौन से यूनिट में वो स्टे कर रहा है, एड्रेस क्या है यूनिट का। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जिससे मैंने ऑटोमेशन किया है, जो ये इनवॉइस क्रिएट हो जाते हैं, ये इससे किया है। ये दो सेल में अगर जो क्लाइंट पुट कर रहा है, अभी उसने डाला है 18 मई टू 10 अक्टूबर, राइट? तो अब कैलेंडर देखोगे तो 18 मई टू 31 मई जो फर्स्ट मंथ हो गया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, उसका यहाँ पे लिस्ट आ गया कि जब तक वो स्टे कर रहा है 10 अक्टूबर, तो यहाँ तक वो उसका ब्रेकअप आ जाता है कि क्या 1 मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ के डेट्स क्या है, उसके नंबर ऑफ डेज आ गए टू बी चार्ज। अब जैसे यहाँ पे उसने लिखा है कि कितना उसको पर डे चार्ज करना है, $173, तो पर मंथ हो गया। लेकिन उसका प्रोरेटेड अमाउंट कितना आ रहा है वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिया विद सिंपल फॉर्मूलाज। फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट सो हार्ड, एनीवन विद बेसिक एक्सेल कैन डू दैट। नाउ यहाँ पे ये हो गया एक बार ब्रेकअप, उसके बाद उसका मंथ वन का रिसिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, जो हो गया 18 मई से 31 मई 2422 अमाउंट का। देखो, अगर मैं इसको इनपुट चेंज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि मेरा मंथ हो गया जून से हो गया, फॉर एग्जाम्पल मई की जगह जून से हो गया, और 18 की जगह 28 से हो गया। अगर आप मेरा ये देखोगे कैलेंडर, अभी आप देखोगे तो ये देखो, फर्स्ट मंथ हो गया 28 जून टू 30 जून, 3 डेज के लिए उसका रेंट ये हो गया। जो मंथली रेंट आ रहा था 5190, तो 3 डेज का हो गया उसका 519। ये ऑटोमेटिक उसके जो रेंट रिसिप्ट जनरेट करनी है उसको, जो क्लाइंट को देने के लिए, वो भी यहाँ पे जनरेट हो गई। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें डिलीट कर दी है, जैसे क्लाइंट का नाम हो गया, लोगो हो गया, वो सब, लेकिन ये सब एग्जाम्पल के लिए है। तो ये ऑटोमेशन मैंने कर दिया। तो देखो, इसको क्लाइंट को कितना है वैल्यू एड हो गया, सब कुछ ऑटोमेशन वैसे हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो उसको लिखना है, वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी प्रिपेयर, जो पेज कॉन्ट्रैक्ट का है जहाँ पे टर्म्स लिखी है, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गई कि मंथ वन का रेंट कितना है, मंथ टू का कितना है, वगैरह वगैरह। तो देखो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया है, बहुत ही सिंपल चीज है। लेकिन क्लाइंट विल वैल्यू दिस value added services. Always try to create automation, process improvement in your work. Also, as I told you, avoid quoting irrelevant experience. अगर आप डेली का एक्सपीरियंस वहां पे कोट करोगे तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है क्विक बुक्स में, तो थोड़ा उसको, प्रो एडवाइजर हूँ यहाँ पे, क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर मैंने ले रखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, और मैं आपको ऐसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो गया अवॉइड कोटिंग इरेलेवेंट एक्सपीरियंस। सबमिट प्रपोजल्स ओनली ऑन प्रोजेक्ट्स यू कैन रियली परफॉर्म। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस। ऐसा नहीं कि आपको पहले से वो सॉल्यूशन मालूम होगा जो क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको वीबीए मालूम ही नहीं है और आप उसको प्रॉमिस कर देते हो कि मैं आपको ये वीबीए टूल बना के दूंगा। तो वो फिर एक अनसेटिस्फाइड क्लाइंट हो जाएगा, उसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आएगा आपको फ्यूचर में। तो ऐसा कभी मत करना, जो काम आप एक्चुअल कर सकते हो उसको ही आप प्रपोज करो। और देखो, क्लाइंट भी एकोमोडेटिंग रहता है। मैं आपका एग्जांपल दूं, मैंने जब भी हेज फंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया, मैं हेज फंड इंडस्ट्री में था मुंबई में, पोस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद मैंने खुद से ये सब अप्रोच से मैंने क्लाइंट क्रैक किया था चेक रिपब्लिक का, जो कि अल्गो हेज फंड था, राइट? तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज करता था वो डिफरेंट था, मैं जो सॉफ्टवेयर सीखा था जिन्यूआ, वो डिफरेंट था, राइट? तो मैंने उससे ये बोल दिया कि चलो मैं ये करूंगा, लेकिन मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है, मुझे थोड़ा सीखने का टाइम चाहिए। मैं आपको ये आपके ही सॉफ्टवेयर में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके सीख लूंगा। तो हमेशा ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको वो मालूम ही नहीं और आप उसको प्रॉमिस कर दो, फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम लोग अभी देखते हैं कि एक्चुअल में
देखो मैं अभी थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। जो सीएस ने प्रपोजल लिखे हैं उसने क्या गलती की है वो देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट थी वो देखेंगे, उसने क्या प्रपोजल लिखे उसमें क्या गलती थी वो देखे, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये हर कोई मिस्टेक करता है, ये सब स्मॉल सी ही या यंग सी ही मिस्टेक करते हैं। ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो बिग फोर या इक्विवेलेंट टू दैट फर्म्स ने भी ये मिस्टेक्स कर रखी है। तो वो भी यहाँ पे हम देखेंगे, राइट, कि क्या गलतियां होती है और कैसे उसको इम्प्रूव करते हैं, राइट। सो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स हियर। अभी देखो हम लोग पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। देखो चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से चैनल से ये रिक्वायरमेंट था, कहाँ से उसने सबमिट किया, लेकिन अप्रोच हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे करना है, राइट। तो फ्रेंड्स ये कोई रिक्वायरमेंट था बुक कीपिंग फॉर ए ग्लोबल कंपनी लोकेटेड इन कनाडा। देखो उसको समझना है कि ये ग्लोबल कंपनी है जो कनाडा में है, राइट। अभी आप देखो उसका ये रिक्वायरमेंट उसने लिस्ट डाउन किया, थोड़ा उसको रीड करो आप, फिर हम लोग सो रिक्वायरमेंट क्या है, अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस लीडर्स। वो एक कोई फॉर्म होगी वहां पे, इज ए मल्टी डिसिप्लिन बुटीक कंसल्टिंग फर्म that supports organizations globally with their diversity, equity, inclusion, and belonging needs. Our clients are fortune ranking companies in US and Canada. We are now hiring a seasoned accountant to join the Unstoppable Performance Leaders team. If you are hardworking and dedicated, Unstoppable Performance Leaders is an excellent company for you. Apply today. फिर उसने कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखी है, राइट। और उसने यहाँ पे ये अपना आवरली रखा है $8 to $15, राइट। और ये सब चीजें हैं। तो आप ये थोड़ा अभी हम उसका सीए ने क्या लिखा है वो देख प्रपोजल में। सी फ्रेंड्स, तो उसने कवर लेटर में क्या लिखा देखो आप। तो हेलो, आई हैव रीड योर रिक्वायरमेंट एंड मीट्स योर रिक्वायरमेंट। तो ये तो सब कोई बोल सकता है, ऐसा तो नहीं है कि चलो मैंने आपका रिक्वायरमेंट पढ़ लिया और मैं ये मीट करूंगा। कैसे करूंगा ये कुछ नहीं लिखा है। आई एम Indian chartered accountant equivalent to Canada CA and has complete knowledge of GAAP internal controls. In past, I have also provided such kind of services to Canadian accounting firm based in Calgary. Request you to give me a chance for interview discussion so that we can discuss your requirement, and I am sure that I will be most suitable candidate for this position. I can easily manage to complete the assigned task within defined timelines. We can negotiate the hours. अभी आप आराम से एक बार वापस इसको पढ़ो। ये जो कवर लेटर है तो कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए लिखा गया है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा पूरा नॉलेज है गैप में, इंटरनल कंट्रोल में, राइट, और मैंने काम कर रखा है ऑलरेडी कैनेडियन फर्म के लिए। तो कनाडा के कोई भी क्लाइंट के लिए हो सकता है, राइट। तो आप इंटरव्यू कर दो, मैं श्योर हूँ कि बेस्ट कैंडिडेट हूँ और ये मैं पूरा असाइन टास्क आपको डिफाइंड टाइमलाइन में कर दूंगा और मैं नेगोशिएट करने के लिए भी रेडी हूँ आवरली आवर्स, आवरली रेट्स, राइट। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा एक प्रपोजल लिख दिया। अभी आप देखो मैं उसका ऑब्जर्वेशन दिया है कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका एक बजट उसने दे रखा था, अगर आप उसमें $25, तो इसने $25 कोट कर रखा था एक्चुअली। हाँ देखो यहाँ पे योर प्रपोज टर्म्स $25। अगर क्लाइंट का बजट आप अंडरस्टैंड करो कि उसका बजट है $8 to $15, इतना भी आप स्किल है आपके पास, लेकिन अगर क्लाइंट का बजट ही नहीं है तो आप इररिलेवेंट आवरली रेट कर रहे हो कोट, तो उसका रिजल्ट मिलना नामुमकिन है, राइट। अभी आप देखोगे अभी आप देखोगे उसके जो नाम उसने दे रखा है, आप देखो अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस लीडर्स। अब आफ्टर द सेशन भी अगर इसका सर्च करोगे तो उसका वेबसाइट मिल जाएगा और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसने खुद भी दे रखी है कि हमारा क्या बिजनेस है। देखो क्लाइंट अगर आके ये बोलता है कि मैं अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस लीडर्स हूँ, मैं मल्टी डिसिप्लिन बुटीक कंसल्टिंग फर्म हूँ और मेरे ये सब काम है,
तो अगर क्लाइंट आपके ऑफिस में बैठा है सामने, तो आप कुछ तो बोलोगे, अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू, आप भी कंसल्टिंग फर्म हो, हम भी कंसल्टिंग फर्म है। तो थोड़ा आप उसको सोशलाइज करोगे। तो उसने तो आप इसका प्रपोजल देखो, अगर उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया, कैसे लग भी नहीं रहा है, सिर्फ हेलो लिख दिया, जो बहुत ही कॉमन है। अगर ऐसा लिखा होगा हेलो अनस्टॉपेबल टीम, जो भी उसका नाम है, हेलो अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस लीडर्स, ऐसा लगेगा कि चलो ये मेरे लिए प्रपोजल लिखा है, क्लाइंट पूरा पढ़ेगा, अदरवाइज तो कैसे पढ़ेगा वो। तो ये एक चीज होगी। फिर उसका अगर प्रपोजल आप देखोगे, तो उसमें बहुत सारे शॉर्ट, जैसे कि इनफॉर्मल हम लिखते हैं। तो ये देखो, रिमोट वर्क में क्या है, अब एक ही मौका मिलता है इम्प्रेशन, क्योंकि आप पर्सनली तो उसको जानते नहीं हो। तो अगर आप इतना इनफॉर्मल लिखोगे, एंड लिखा है कहीं पे, और ये आई स्मॉल में लिखा है, तो ये बेसिक चीज है, लेकिन मैं ये थोड़ा एक बेसिक कवर करना चाहता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स है इसमें, तो ये आप कवर कर सकते। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, योर प्रपोजल ओनली स्पीक्स अबाउट योरसेल्फ। इट्स वेरी generic sentences which fit every job with minor twist, right? Doubt whatever you have written, देखो डाउट नहीं है आपके स्किल्स पे, बट यू नीड टू बी मोर सोशल फर्स्ट टू कनेक्ट विद द क्लाइंट। अगर एक बार कनेक्शन हो गया, उसके बाद आप जितना भी बोलोगे आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वो क्लाइंट बिलीव करेगा। पहले ट्रस्ट क्रिएट करना है, राइट? सो सो हम क्या लिख सकते हैं, सो ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि आई एम ग्लेड टू कनेक्ट विद ए फर्म हु इज हेल्पिंग अदर बिजनेस फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। क्लाइंट ने लिख रखा है कि हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, राइट? उसके वेबसाइट में भी अगर आप देखोगे तो ये लिखा है कि हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये मैंने वेबसाइट से एक्चुअली ले रखा है कि आई एम ग्लेड फ्रॉम हेल्पिंग बिजनेस फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, उसकी वेबसाइट में लिखा था। तो क्लाइंट को मिल जाता है कि आप ये थोड़ा रिसर्च करके आया है बंदा, थोड़ा उसको मुझे इंटरेस्ट है, राइट? और कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू क्लाइंट जनरेशन बीइंग एन अन, लाइक मैं खुद भी एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, काम आपके साथ काम करने से। तो ये इससे कनेक्शन बनता है, और क्लाइंट को आपका प्रोफेशनलिज्म, एडवाइजरशिप, वो, राइट? सो rather than just saying I'm a chartered accountant, you can say being a chartered 6 years of experience, I have conducted financial reports preparation exercise in accordance with gap compliance for this many years, this many sectors, right? So also try to match your requirement in your story, जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो उसको भी आप थोड़ा प्रपोजल में लिखोगे, उसको एड्रेस करो ईच एंड एवरी पॉइंट को, तो आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलेगा। सो जैसे क्लाइंट ने पूछा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के बारे में, प्रपोजल कुछ नहीं बोल रहा है, हमने सिर्फ सीए डिग्री पे ही। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन वी आर नॉट गेटिंग। बेसिक सा एक पहला मैंने एग्जांपल दिया आपको, हम लोग एक थोड़ा एडवांस में डायरेक्ट चले जाते हैं तीन। तो देखो ये प्रोजेक्ट हम देखते क्या है में, एक एडवांस लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि क्लाइंट ने लिख दिया लॉन्ग टर्म बुक कीपर, हेलो आई एम लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म बुक कीपर टू ज्वाइन माय अकाउंटिंग फर्म। प्लीज गाइस उसको रीड करो, समझो, ये एक अकाउंटिंग फर्म है जिसको बुक कीपर चाहिए। वी वर्क इन क्विक बुक्स ऑनलाइन, इज दिस समथिंग दैट वुड इंटरेस्ट यू? तो ये क्लाइंट का एक रिक्वायरमेंट आ गया। अभी हम देखते हैं कि उसने प्रपोजल क्या लिखा है। Hi sir, I'm experienced Indian chartered accountant having 15 years of experience in accounting. I would like to mention that though I am new to Upwork, but new world of bookkeeping, and I am looking to get my first client that I can build upon. If you take a look at my profile and feel that I can help you, I will do it for $12.50 per hour. And I assure you that you will get the same high quality service and better turnaround time. देखो इसमें ये जो प्रपोजल आप दूसरी बार पढ़ोगे, तो ये कहीं पे भी मैं चिपका सकता हूँ, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, राइट? उसने ये रियलाइज भी नहीं किया है कि अकाउंटिंग फॉर्म को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिख रहा है कि क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? देखो मैंने इसका रिव्यू किया है, अभी पॉइंट वाइज हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला आपको रीरीड करो उसके प्रपोजल,
उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, हर क्लाइंट के साथ ये सेम प्रपोजल लिख देंगे तो चलेगा। अभी हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं कि आई एम ग्लेड टू कनेक्ट विथ एन अकाउंटिंग फर्म willing to outsourcing bookkeeping jobs as I myself being a chartered accountant run a small accounting firm and I am looking to connect clients for my firm। हो गया जो कि हमको मालूम हुआ इतने शॉर्ट कि एक अकाउंटिंग फर्म है, उसका यूज करके हमने उसके साथ सोशलाइज कर दिया। आप समझ रहे हो? क्लाइंट आप तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा काम, आप थोड़ा बोलेगा ना हाँ अच्छा ये हम करते हैं, आप अच्छा हुआ हमारे पास आए और आपको आपसे मिलकर अच्छा हुआ, आप एक कंसल्टेंसी फर्म हो, हम भी एक कंसल्टेंसी फर्म, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं सर्विस बिजनेस में क्या होता है। तो ऐसा ही सोशलाइज कर दिया हमने। अभी अभी ये अगर आपका था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ओवरसीज क्लाइंट मिलने के लिए, ये सोशलाइज किया, तो फिर लिखते कि फॉर द सेम आई हैव ऑलरेडी गेन, ये रिक्वायरमेंट था उसका भी आपने बता दिया कि मेरे पास स्किल है। फिर आपने बोला बुक कीपिंग, देखो आप अभी एड वैल्यू कर रहे हो, बुक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर एनी बिजनेस एंड इट्स अ कंटिन्यूअस जॉब, hence hiring a person available for long term is beneficial for any business as I'm working on a handful clients I can commit for a long term। गाइस हमेशा समझो, एक मिस्टेक लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं मेरे पास 150 क्लाइंट्स है इंडिया में, मेरे पास 500 क्लाइंट है इंडिया में। अगर ऐसा आप बोलोगे तो क्लाइंट सीधा आपको क्रॉस कर देगा, क्योंकि अगर आपके पास इतने सारे क्लाइंट है तो आप कैसे एक और क्लाइंट को हैंडल कर पाओगे? तो कभी भी ऐसा मत बोलो। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल बोलो मत, ऐसा ही बोलो कि मैं हैंडफुल क्लाइंट। इनिशियली आपके पास यूनिक पॉइंट क्या है? देखो ये स्मॉल बिजनेसेस है, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए अगर आप बोलो कि मैं स्मॉल बिजनेस में खुद हैंडल करूंगा, खुद रिव्यू करूंगा, तो उसको ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा रादर देन ये बोलने जैसे कि मेरे पास 150 क्लाइंट्स है, राइट? हैविंग सेड दैट, दिस जॉब इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टू मी। देखो क्लाइंट जो भाषा में बात करता है, हर एक क्लाइंट का पर्सनालिटी अलग रहता है, वुड इंटरेस्ट यू, तो आपने बोल दिया। ये सब बोलने से मुझे ओवरसीज क्लाइंट चाहिए, मैंने क्विकबुक्स ले रखा है, मुझे लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी है, इसलिए मैं इंटरेस्टिंग हूँ ये जॉब के लिए। तो देखो कैसा वो कनेक्ट हो गया उसके रिक्वायरमेंट के साथ। लॉन्ग टर्म बुक पर चाहिए था वो भी मैंने बोल दिया, इंटरेस्ट का बोला था वो भी मैंने बोल दिया, तो उसके ये 3 लाइन से मैंने कितना अच्छा प्रपोजल यहाँ बना दिया। फिर से इसको रेड करो। और ये कॉल टू एक्शन कोई भी चीज हो, अगर आप ईमेल लिख रहे हो, अगर आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो, अगर फोरम में कुछ लिख रहे हो, कॉल टू एक्शन के बगैर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आपने देखो यूट्यूब वीडियोस में लोग बोलते प्लीज लाइक सब्सक्राइब, अगर बोलोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, लेकिन बोलोगे तो चांसेस है कि यू विल गेट लाइक, अगर किसी को लाइक अच्छा लगा तो लाइक करेगा। तो उसमें भी देखो प्लीज लेट मी नो वेयर व्हेन वी कैन कनेक्ट फॉर अ शॉर्ट मीटिंग टू डिस्कस फर्दर। देखो क्लाइंट से जवाब चाहिए, तो कुछ कॉल टू एक्शन इसको बोलते हैं, कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग सा दोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग द रिस्पॉन्स इज हायर। और एक बार रिस्पॉन्स मिल गया फिर तो वो अपना जैसे लोकल क्लाइंट के साथ बातचीत चलती है वैसे यहाँ पे चलती रहेगी, राइट? तो कॉल टू एक्शन हमेशा कोई भी आउटरीच चैनल हो उसमें इंक्लूड करो आप। तो ये 15, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं एक, लेट मी क्लोज ऑल दिस फर्स्ट। तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं फटाफट, जैसे कि ये हो गया बुक कीपर क्विक बुक्स ऑनलाइन कनाडा, right? So I do about 2 million per year in sales. Please, guys, average transaction value is 15,000. I am looking for a full-time bookkeeper to keep my QuickBooks up to date, transaction categorizes and the rest. I estimate 2 hours per week. Good verbal English is required, right? एक एग्जांपल है। अभी हम इसका प्रपोजल देखते हैं फटाफट। तो वापस देखो, हाय ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, हमने अपने बारे में बोल दिया, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट विद गुड 15 years of accounting experience. I have gone through your proposal and offer my services for the proposal. I have provided such kind of services to corporation based at Alberta, Canada and have good experience. इतना बोल दिया है तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन क्लाइंट को कैसे रियलाइज होगा कि आपने उसका रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड किया है, आप उसके लिए लिख रहे हो और आपको ये सब एक्चुअल में एक्सपीरियंस है। देखो मैंने सिंपल सा इसका रिव्यू करके उसको सजेशन किया है। देखो ये तो ये वेरी कैजुअल प्रपोजल राइटिंग हो गया जो हमने देखा।
अभी आप देखो इसको हमेशा एक विजुअलाइज करो कि क्लाइंट अगर आपके सामने ही पड़ा, आप एक्चुअल में वो काम करने वाले हो, तो ये अगर प्रपोजल आपको मिलता है प्रोजेक्ट, तो आप ऐसा बोलोगे लगा 2 मिलियन इन ईयर से, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे ना कि 2 मिलियन से मतलब $20 लाख, और 15,000 का ये अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू एवरेज, तो कितने ट्रांजेक्शन हो गए। थोड़ा तो उसको कैलकुलेट करके उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, कुछ अगर आपको डेटा दे रहा है तो उसका कुछ तो यूज करोगे। देखो मैंने लिखा है, आई एम ग्लेड टू कनेक्ट विद सीजन्ड अपवर्क क्लाइंट लाइक यू। फर्स्ट देखो कांग्रेच, थोड़ा अपना पर्सनालिटी को वहां पे आउटस्पोकन बनो। कांग्रेचुलेशन फॉर रीचिंग $2 million मार्क इन सेल्स फॉर योर बिजनेस। आई सी यू हैव हाई टिकट साइज क्लाइंट्स। देखो मैंने ये बोला हाई टिकट क्लाइंट्स हैं, तो उसको रियलाइज होगा कि चलो ये समझ रहा है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। सो आई प्रिज्यूम ईयरली इनवॉइसेस वुड बी जस्ट ओवर 100। अगर आप 2 मिलियन को 15,000 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा 100 के आजू बाजू में आ जाएगा नंबर। सो इट वुड नॉट टेक मच ऑफ द टाइम एज रिगार्ड बुक कीपिंग फॉर देम। तो यहाँ पे जो इनकम पार्ट है उसका बुक कीपिंग इजी है। हार्ड क्या है, तो क्रिटिकल पार्ट इज एक्सपेंस कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल द डेबिट्स इन द बैंकिंग फीड। सो इनिशियली आई वुड नीड यू टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। अगर बिजनेस समझ में आएगा, जैसे आईफोन परचेस किया, तो कोई बिजनेस के लिए कोई डिफरेंट टाइप का एक्सपेंस रहेगा, किसी के लिए वो R&D का एक्सपेंस रहेगा अगर टेक्नोलॉजी फर्म है तो बिजनेस समझोगे उसके हिसाब से तो कैटेगराइज करोगे। तो उसके लिए आपको क्लाइंट का हेल्प चाहिए, एंड हाउ यू कैटेगराइज ईच एक्सपेंस, राइट। बट एज वी डू ए कपल ऑफ मंथ्स ऑफ बुक कीपिंग, आई कैन परफॉर्म द टास्क माई सेल्फ विथ लिटल और नो हेल्प। अगर एक बार समझ में आ गया कि ये स्टारबक्स में जो भी मीटिंग कर रहा है वो एक्चुअली उसके क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, तो ये मार्केटिंग का पार्ट है, तो मार्केटिंग में कैटेगराइज करना है। अगर वो समझ में आ गया फिर हर बार उसकी जरूरत नहीं है। एंड आई विल इवन ऑटोमाइज मोस्ट ऑफ द कैटेगराइजेशन। इसमें एक फीचर है बैंक रूल का क्विक बुक्स में, जिससे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आपने अप्रोच भी दे रखा है यहाँ पे देखो प्रपोजिंग सॉल्यूशन, तो उसका इम्पेक्ट पड़ता है। सो हैविंग सेड दैट, अगर आपने देखो एडवाइस दे दी, आपने सब ये अपना प्रपोज सॉल्यूशन बता दिया, अगर आप अभी बोलो कि आई 15 years of experience, I have provided such services, तो उसको मोर बिलीवेबल रहेगा। आपने ऑथोरिटी क्रिएट कर दी, आपने ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, राइट। उसके बाद और फिर ये कॉल टू एक्शन, प्लीज लेट मी नो व्हेन वी कैन कनेक्ट फॉर अ शॉर्ट मीटिंग टू डिस्कस फर्दर, राइट। तो ये एक अच्छा अप्रोच हो जाता है रादर देन जस्ट सेइंग आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी भी स्टैंडर्ड सेंटेंसेस तो हर क्लाइंट को चिपका सकते हो, ये मत लिखो, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप अपना भी देखोगे जिसको भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको रीजन वही है कि आपने अगर आप री रिव्यू करोगे खुद से, तो आप देखोगे बहुत ही जेनरिक अप्रोच है अपना। सो अकाउंटेंट नीडेड फॉर स्मॉल बिजनेस, नीड सम, एक अलग सा रिक्वायरमेंट है, नीड समवन टू रिव्यू माय ट्रांजैक्शंस ऑन क्विक बुक्स एंड रीऑर्गेनाइज इफ नीडेड टू क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, राइट। ये रिक्वायरमेंट है एकदम स्मॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका प्रपोजल हम देखते हैं। हेलो, आई हैव bookkeeper, just started on this portal. Please consider my profile opportunity. I will provide best quality at lower rate. देखो इतना लिख दिया, इसमें कोई क्लाइंट एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। सो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आई थिंक यू नीड consultation of chart of account setup review for your QuickBooks Online. Every business is unique and needs proper set of chart of accounts. क्योंकि देखो चार्ट ऑफ अकाउंट है कि कौन कौन से अकाउंट, किस अकाउंट का सब अकाउंट क्या है, कौन सा रेवेन्यू अकाउंट है, कौन सा एक्सपेंस अकाउंट है, ये एक अकाउंट के लिए सेटअप करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि इसमें से लग रहा है कि उसका वो सेटअप रिव्यू करवाना है, राइट। ऐसा हमने एडवाइस दे दिया। चार्ट ऑफ अकाउंट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस लिस्ट, ये मीनिंगफुल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये हमने यहाँ पे अपना एडवाइजरी नॉलेज थोड़ा दे दिया। अब ये बोलते बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद क्विकबुक्स ऑनलाइन प्रोवाइड विद अ सर्टिफिकेट एंड आल्सो एक्सपीरियंस इन चार्ट ऑफ अकाउंट सेटअप फॉर मेनी बिजनेसेस, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दिस। तो हमने पूरा एक सेंटेंस बोलने की जगह कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये हमने उसको थोड़ा स्टोरी बना दिया कि चलो ये मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्विकबुक सर्टिफाइड हूँ, और मैंने ऑलरेडी ये काम कर रखा है, इसलिए मैं डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ ये इस काम में। एंड ये देखो इसको थोड़ा अर्जेंसी रहेगा शायद, हम ऐसा भी स्ट्रॉन्ग मतलब स्मॉलर जॉब्स के लिए इतना स्ट्रांगली भी बोल सकते हैं कि आई कैन स्टार्ट टुडे
and deliver you in next 24 hours if you award me the job, right? So अपने स्मॉल जॉब्स के लिए हमेशा अर्जेंसी रहती है क्लाइंट को, तो आप ऐसा बोलो कि मैं आज ही कर सकता हूँ तो क्लाइंट ज्यादा आपको रिस्पॉन्स देगा, राइट? तो ये सब टेक्टिक्स है वो आपको करनी है। तो बेसिकली हम लोग अगर वापस हमारे प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, थोड़ा हमने ये राइटिंग जो ये थियोरेटिकल है उसका हमने प्रैक्टिकल देखा कि एड्रेसिंग क्लाइंट पॉइंट्स, आपका सॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करो विद स्टोरीज, ऑटोमेशन अचीव करो, प्रोसेस इंप्रूवमेंट अचीव करो, ऐसा कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, इररिलेवेंट एक्सपीरियंस को कोट मत करो, और यहाँ पे ओनली प्रोजेक्ट्स विच यू कैन एक्चुअली परफॉर्म उसमें ही सबमिट करो, राइट? तो ये हमने देख लिया। अब एक बार आपको काम मिल गया अच्छी स्ट्रेटेजी से आपने अगर किया, तो सक्सेसफुल कैसे बनना है, ये जो आपने डिलीवरी करनी है सर्विस की वो कैसे सक्सेसफुल करनी है वो थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफली। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज नो, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं कि अभी कहीं भी हर्डल आ जाती है लोकल काम में, तो हम वो काम करना ही बंद कर देते हैं। जब भी उसकी अर्जेंसी आएगी तभी वो काम करेंगे। लेकिन ये रिमोट वर्क में ऐसा कभी मत करो, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर आपने उस वजह से उसको डिले कर दिया या काम ही नहीं किया वो, फिर वो जब भी आप उसको बोलोगे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ही अनप्रोफेशनल हो जाएगा सिचुएशन, राइट? तो ये मत करो प्लीज। फील फ्री टू टेक टाइम अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर और टूल्स। देखो ये सब क्लाइंट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप फर्स्ट डे से डिलीवर करो, वो समझते हैं कि उसको टाइम लगेगा ये सब समझने में करने में। तो देखो मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है मेरा हेज फंड का। मैं जब हेज फंड बुक कीपिंग कर रहा था, मैंने 1.5 months फ्रेंड्स एट $40+ पर आवर, मैंने 1.5 months वो भी बिलेबल। ऐसा नहीं कि मैं अपने खुद से टाइम पे कर रहा था, वो क्लाइंट को बिल भी करता था वो ट्रेनिंग के लिए, मेरा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? तो वो इतना प्राइस सेंसिटिव नहीं रहते हैं कि आपको अगर पर आवर बेसिस पे हायर कर रखा है तो वो अगर आप ट्रेनिंग में या रिसर्च में टाइम दे रहे हो तो उसको आप पैसा नहीं देंगे। एक्चुअली ये अप्रिशिएट करते हैं अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो, राइट? तो ऑलवेज डू दैट। ऑल्सो गिव रेगुलर अपडेट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब तक क्लाइंट का कॉल नहीं आता है तब तक उसका काम ही स्टार्ट नहीं करते हैं। आप यस और नो में बोलो कि आपने कभी ऐसा किया है, कोई काम है वो तभी स्टार्ट करते हो, कभी तो ऐसा किया होता फ्रेंड्स प्लीज। अब आप यस और नो में बोल दो, आपका सीपी हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग फन पार्ट करते हैं, गिव मी आंसर इन यस और नो। आपने कभी ऐसा किया है कि क्लाइंट ने जब तक कॉल नहीं किया आपने काम स्टार्ट नहीं किया? तो एक यस तो मुझे मिल गया, चलो मैं भी मतलब सही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो। तो देखो इसमें ऐसा मत करो, क्योंकि उसका रीजन है। देखो यहाँ लोकली तो क्या होता है कि उसको मालूम है कि ये सीए साहब है, उसका ऑफिस यहाँ पे और वो काम करते हैं, उसको बिजी रहेगा इसलिए नहीं किया है उसने। लेकिन वहां पे क्या है, वो तो आपके लिए एक अननोन एंटिटी है। हम जो एज ए सर्विस प्रोवाइडर, वो क्लाइंट वहां पे बैठा हुआ है, उसने हमको कभी फिजिकली देखा नहीं है, कैसे हम वर्क करते हैं, तो पूरा एक है ना अनस्ट्रक्चर्ड वो हो जाता है। तो अगर आप उसको अपडेट्स नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, उसको अनट्रस्ट हो जाएगा और वो वरी करेगा कि ये काम कर रहा है, ये भाग गया, उससे नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। और अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने अगर उसको बोला कि मैं 24 आवर्स में ये काम कर दूंगा, अगर मेरे से नहीं होता है तो भी मैं उसको अपडेट देता हूँ कि ये रीजन से मैंने ये काम नहीं किया है आज, मैं नेक्स्ट 24 आवर्स या 40 आवर्स में कर दूंगा ये। तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा रादर देन अब साइलेंट होके बैठ जाओ कि चलो एक दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, वो फॉलो अप करने का सोचेगा तब तक तो मैं काम कर दूंगा। ऐसा मत करो प्लीज। आप उसको अपडेट दो, कोई भी हो वो बिलीव करेगा। अगर आप बोलोगे चलो आज मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, जेन्युइन हो या पर्सनल हो कुछ भी हो, आप उसको बोल दो कि इस वजह से नहीं हुआ है, तो क्लाइंट उसको अप्रिशिएट करेगा रादर देन सेइंग दैट आपने क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो कम्युनिकेट रिमोट वर्क में प्लीज अंडरस्टैंड सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए। अभी देखो मैंने जैसे बोला इवन इफ देयर इज नो प्रोग्रेस ऑन योर प्रोजेक्ट अल्सो, तो भी उसको एक बार कमिटमेंट दिया है कि 24 आवर्स में करना है काम, नहीं हुआ है तो उसको अपडेट दे दो कि चलो ये नहीं हुआ है। अच्छा, अभी एक चीज और है कि टेस्टिमोनियल्स लो क्लाइंट से। अगर एक क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, थोड़ा काम कर दिया, तो आप उसको लिंक्डइन से ले लो, वीडियो में ले लो, कहीं भी उसको टेस्टिमोनियल ले लो, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आएगा, दूसरे काम लेने के लिए काम आएगा। और जब भी क्लाइंट देखता है कि आप इतने प्रोफेशनल हो और आपको ग्रो करना है, तो वो आपको हेल्प भी करेगा, टेस्टिमोनियल तो देगा, रेफरेंस भी देगा।
आप इसको लगेगा ये डायनेमिक पर्सन है, उसको ग्रो होना है, तो अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करेगा, सिर्फ टेस्टिमोनियल ही देगा, वो आपको रेफरेंस भी देगा, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इसको लगेगा ये ग्रोथ पर्सनालिटी, ये डायनेमिक है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें बेसिक है जो आप ध्यान में रख सकते हो, राइट। सो अभी हम लोग थोड़ा लेते हैं। Before that, like I want to thank you everyone who is attending the lecture. Like I can see almost 100 participants active right now. So I am hopeful that I have added some value. I see, I expect you to have dollar revenues just like in this picture. You can see, just rather than having just rupee revenue, I expect you to have dollar revenue, and it grows every year. And if you have any questions after this session as well, you can reach me to this mobile and this email address, so I can guide you. With that, let's take question and answer, please. Thank you, Dhaval sir. This has been a very knowledgeable session. आपने जो बताया है रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ही यूजफुल चीज रहेगी मेंबर्स के लिए, those who are looking for for different or other avenues other apart from this traditional practice. तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके सेशन के थ्रू. So now I request members, if they have any queries or questions, so they can put in the chat box or you can raise the hand so I can unmute them. Pooja ने लिखा है, what should be the deposit amount while submitting a proposal? No, friends. See, there cannot be any deposit amount. Please, friends, try to understand. See, in world out there, there is a lot of scammers also going away. Like so, आप उसको कभी भी एक फ्रॉड को डिटेक्ट करो, कभी भी वो डिपॉजिट अमाउंट मांगता है तो आप समझ लो कि वो जेन्युइन नहीं है, उसको आप अवॉइड करो। क्योंकि देखो 100 जेन्युइन में एक तो आ जाते हैं स्कैमर्स, तो आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसको नहीं वो कोई नहीं, इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट कहीं भी कोई नहीं डिमांड करता है, और करे भी तो आप उसको मत करो। जेन्युइन पोर्टल्स कोई भी डिपॉजिट अमाउंट नहीं करते हैं। यस, एग्जैक्टली। Any other question from any member? Okay, how to identify genuine portals? Okay friends, this is good. जैसे मैंने आपने देखा होगा, मैंने अपवर्क का बहुत टाइम मेंशन किया है। मैं अपवर्क क्यों मेंशन करता हूँ, उसका रीजन है। यहाँ पे देखो कि एक उसका सिस्टम्स है, जैसे कि एक हो गया फीडबैक सिस्टम, जिसमें क्लाइंट फ्रीलांसर को फीडबैक दे सकता है और फ्रीलांसर क्लाइंट को फीडबैक दे सकता है आफ्टर द जॉब। तो कोई भी क्लाइंट आप देखोगे तो उसके पास्ट के रिव्यूज देख पाओगे, क्लाइंट भी अपना रिव्यू देख पाएगा, हम भी क्लाइंट के रिव्यू देख पाएंगे, राइट। तो एक हो गया फीडबैक सिस्टम। दूसरा उसका हो गया पेमेंट प्रोटेक्शन। तो उसने ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रखा है कि फिक्स प्राइस जॉब है तो वो अपफ्रंट क्लाइंट से पैसा ले लेता है और वो अपने पास रखता है, उसके वो क्लाइंट को फ्रीलांसर को वापस मिलता है, राइट। सेकंड, और आवरली में उसके पास उसका क्रेडिट कार्ड रहता है, उसमें वो चेक करते रहे कि बैलेंस है कि नहीं है, तो वो वीकली बेसिस पे आपको उसका पैसा मिल जाता है, राइट। तो पेमेंट प्रोटेक्शन हो गया। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। ओके okay, so how you can get the knowledge about abroad taxation and regulations? So as I told you, enablers, पहले तो आप रेगुलेटर के पास चले जाओ। जैसे कि हमारा सीए रेगुलेटर है ये बिजनेस में, सीए में, राइट। आईसीए है, तो ये सब वेबिनार हो रहे हैं, आप ये यूट्यूब में भी देख सकते हो, कहीं और भी देख सकते हो। जैसे मैंने सीपीए का देखा है आपको वेबिनार्स, तो वहां से आपको नॉलेज मिल सकता है। कोई बुक से मिलता, कोई कोर्सेस ले लो, कोई वेबसाइट ऐसा मिल जाए। तो आप कोई भी मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप यूएस टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो उसमें आपको फोरम, बुक्स, रेगुलेटर, एनेबलर्स, जैसे कि आप एग्जांपल लेता हूँ मैं, पेरोल प्रोसेसिंग इन यूएस है, तो वहां पे पेरोल टैक्स होल्डिंग रहता है, पेरोल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, राइट। तो उसके लिए गस्टो, GUSTO, गस्टो करके एक सर्विस है, तो वो एनेबलर है। उसके साथ आप कनेक्ट करोगे तो वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ बैठे बैठे पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ गस्टो। जैसे क्विक बुक्स अकाउंटिंग के लिए, तो पेरोल टैक्सेशन के लिए उसके लिए गस्टो है। तो थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। Whether foreign currency permission is required for receiving remittance from foreign country? No, it's not required.
जैसे आप पेपल हो गया, पेयोनियर हो गया, उसमें से आप इजीली पेमेंट ले सकते हो, कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। और वो आपको FIRC डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट भी क्लेम करना है तो आपको FIRC डॉक्यूमेंट भी दे देंगे। जैसे पेयोनियर हो गया, पेपल हो गया, वो ऑटोमेटेड आपको देते हैं। Correct. Someone is asking how to learn from QuickBooks। तो जैसे मैंने बताया कि ये सब जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, नॉट ओनली QuickBooks, वो हर एक का एक पार्टनर प्रोग्राम बोलते हो, और अकाउंटेंट के लिए कोई रिसोर्स सेंटर रहता है, वहां से आप उसका अगर ट्रेनिंग है तो वो ले सकते हो, ब्लॉग है, तो वीडियोस है, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। आप अगर उसमें कोई भी वेबसाइट में जाओ तो कहीं या बॉटम पार्ट में रहेगा या कोई टॉप पार्ट में मेन्यू में रहेगा फॉर अकाउंटेंट, फॉर बुक कीपर्स, वो सेक्शन में जाओगे तो आपको वो सब मिल जाएगा। Okay, Nikhil is asking whether we get this PPT. Of course, you will get this PPT. Institute will send you on your registered email IDs. Any other member with any question? I think that's all, Dhaval sir. This has been a very knowledgeable session. बहुत कुछ सीखने को मिला कि how we can go into this new dimension or unexplored territory. So thank you very much. Only thing I want to add in this is as I told you, you need to be consistent in your approach. If you find the right approach, as I told you, you get the brief idea. Now you have to consist, like every day if you input 1 or 2 hours in this effort of learning the skills, finding the right channel, experimenting. If you do it for a consistent way, you will definitely get the result. So the 80% is the approach which we discussed, and 20% is the consistency. If you do it for 5-10 days, and for next 6 months if you don't do anything, then you will not get any result. So True. Yes, exactly. You have to keep trying. Yes. एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली ये तो ट्रू है ही, ये तो करना ही पड़ेगा. Perfect. So that is my last maybe message. we submit some proposal but we don't get the reply. That doesn't mean we will never get a reply. Yes. See, if you are consistent, if you are not getting result, then you will keep on thinking that something wrong I am doing, and you will try to find out that wrong thing rather than leaving that altogether. Exactly. Right? So that is my last message here. So say Nikhil asking about subscripting to QuickBooks. So you don't need to subscribe to QuickBooks. Client will add you as an accountant in his QuickBooks subscription. So you don't need to subscribe. Maybe they can take the trial version for learning. Yes, yes. Okay, sir. I think we should wind up this session. There's no more questions. So thank you very much once again from behalf of all the attendants and ICI Jaipur chapter. Thank you very much for this session and giving us your valuable time. We would definitely like to have another session with you on this topic for further more details and for more insights into this thing. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yeah. Have a good day, everyone ahead. Bye-bye. Bye.